Finally, Bank of America just announced academic tech intern, which is mega hiring going on. This is 3 multiple location is there, and if you see here, must be at least 18 years of age. So this is full-time opportunity, but keep in mind what is going on. In this video, I'm going to tell you Superset urgent mega hiring and 3 referral opportunity for Cognizant. Just take referral just now because only few hours or even 24 maybe or 15 hours is left, but please watch video till end and don't skip even a single second. Just go and apply for Forma. If you are not applying for Forma, tomorrow is the first interview. ठीक है, अभी भी हो रहा है और 5th of January को joining date is there. ExaView biggest mega hiring is going on. If you did not watch this video, just watch it. Please go for Forma and apply for Dietist opportunity, Superset, Capgemini and Tower Research and Superset. Please go and apply for this opportunity. Now understand who is eligible. This is official hiring. Bank of America just announced only for 2026 batch. Yeah, you heard it right. This is for 2026 batch and this is for final year student from the class of 2026 only. This is mega hiring is going on. And if you see here that ME MTech is only eligible, computer science, IT, software engineering is eligible. Now this is 80% in the last semester CGPA, not in 10th-12th. It means you can easily apply for this opportunity. Certification good to have it. It's not mandatory or no experience is required because only fresher is eligible basically. Now keep in mind this is shortlisting, so you have to put these domain which is written here, which is very basic. Anyone programming, agile methodology or enterprise skill good to have में देखोगे. So desired skill you can easily AI/ML application, cloud platform and some enterprise skill again is written here. Put these domain to get shortlisted because there is a shortlisting and you have to update your resume. ठीक है, so click on apply now. Apply it as soon as possible, but please first read these skill part because here you can see that these are skills which is required skill. And if you scroll up that here is also written ME MTech, computer science, IT, software engineering is eligible, and for this also MCA is eligible. So there is 2 role basically. First one is if you see that these Python, Hadoop is required, and for this ME MTech is eligible and for this MC is eligible and criteria is same but यहाँ पे MC होने वाला है बस. ठीक है, and again fresher is eligible, so please apply for your job preference. मतलब जो भी तुम MCA से हो तो ये चीजें ऐड करना बहुत मैंडेटरी. एंड प्लीज रीड रिस्पॉन्सिबिलिटीज पार्ट टू बेटर अपडेट योर रेज्यूमे. ठीक है, और यहाँ पर भी अगर देखोगे फाउंडेशन स्किल इसकी होने वाली ME MTech के. सो प्लीज कीप इन माइंड जो तुम ऐड कर रहे हो उसी के सेक्शन पे जाके रिक्वायर्ड स्किल को ऐड करना है, उसी के डोमेन उठाना है, और ये वाला जो स्किल एक्सपोजर है ये तुम्हारा इसका होने वाला है. सो प्लीज एक बार अच्छे से देखना क्योंकि सेक्शन मतलब अटैच कर दिया गया है, दैट्स वाई थोड़ा सा ध्यान से देख के करना. ठीक है, बट ओनली फ्रेशर इज एलिजिबल एंड ओनली 26 बैच इज एलिजिबल. सो प्लीज अप्लाई इट एज सून एज पॉसिबल. दिस इज हिडन जैम. ठीक है, अप्लाई इट एज सून एज पॉसिबल. सो फाइनली दिस इज सुपरसेट अर्जेंट अपॉर्चुनिटी. Accenture announced cloud and generative AI and cloud developing. So window is open but here is not written any CTC वगैरह. Pan India opportunity, work from office, full time position at Accenture. ठीक है, cloud की है, generative AI is there and cloud developing is there. So please put these domain which you are interested for. Only BE BTech grads is eligible, 23, 24, 25 batch, 60% CGPA, no percentage criteria in 10, 12th, only in graduation. ठीक है, please put these must have skills on your resume and the process is simple. If you get shortlisted then there is the interview. ठीक है, but if you have the certification then only you can apply. Now interested candidate can apply at this deadline is 2 December 2025 पोस्ट शॉर्टलिस्टिंग. एसेंशियल विद टच बेस मतलब शॉर्टलिस्टिंग हो जाएगी तो तुम्हें मिल जाएगा, बट मे बी ये भी ओपन है मेरे हिसाब से. तो अप्लाई नाउ पे क्लिक करके अप्लाई कर लो अगर ओपन है. तो नहीं है तो मूविंग फॉरवर्ड कॉग्निजेंट की 3 रेफरल अपॉर्चुनिटी बता रहा हूँ. जस्ट टेक रेफरल जस्ट नाउ. ठीक है, 25 यहाँ प्रोग्राम एनालिस्ट ट्रेनी का रेफरल मिल रहा है. 25 24 बैचेस एलिजिबल एंड दीज डिग्रीज आर एलिजिबल. एंड फॉर दिस इफ यू स्क्रॉल डाउन BE BTech ME MTech फॉर प्रोग्राम एनालिस्ट ट्रेनी, और इसके लिए तुम्हारा एनालिस्ट ट्रेनी होने वाला है. अगर तुम यहाँ पर देखोगे वही चीज़ है, बट यहाँ पे 3 रेफरल मिल रहा है. एक तो ये है, ठीक है, सेकंड वन इज इसका हो जाएगा और थर्ड वाला इसका हो जाएगा. तो 3 मैंने आईडी तो मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ. टेक रेफरल फ्रॉम दीज आईडीज एंड अप्लाइड एज सून एज पॉसिबल. और ये ऑफिशियली हायरिंग है. ठीक है, बता दूं ये ऑफिशियल लोग हैं कॉग्निजेंट में काम करने वाले. ठीक है, दे आर गिविंग यू रेफरल. टेक रेफरल एज सून एज पॉसिबल फॉर प्रोग्राम एनालिस्ट और फॉर एनालिस्ट ट्रेनी, बट द क्राइटेरिया इज डिफरेंट. कीप इन माइंड 60% इज रिक्वायर्ड इन
PAT or for 80-50% or batches or degrees. See, batches is same but degrees or percentage criteria is different. So please उसी के लिए रेफरल मांगना जिसमें तुम एलिजिबल हो, ठीक है. So please apply it as soon as possible for Accenture if this is open. If not, then please apply for Bank of America, and if you not applied for Fidelity Pharma, this is for BTech Mass Hiring 26-25 direct referral opportunity. For this they are also providing direct referral. Same I already uploaded yesterday direct referral opportunity for Hexaview. 7 LP is the package and only fresher is eligible. So please apply it as soon as possible. Like this video, do subscribe our channel, share my videos as well. Thanks for watching.